Namaskar everyone, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu. And before we start, I would say you don't have to be great to start, but you have to start to be great. तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इंपॉर्टेंट खबरों पे नजर डालते हैं। आज की हमारी पहली हेडलाइन है COP15 Summit adopts historic biodiversity deal. It is available on page number 1 और ये related है paper 3 environment section से. In this article, we have to know outcomes of the United Nations Biodiversity Conference and their significance. तो friends, recently at the United Nations Biodiversity Conference, negotiators reached an agreement to protect 30% of land and water considered important for biodiversity by 2030, also known as 30 by 30, right? Our next important headline is a role for India in a World Wide Web. It is available on page number 6 और ये related paper to international relations से. In this article, we have to know about India's role in shaping the emerging global network which would define international relations and world politics in 21st century, challenges and ways to tackle them. तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक? Our next important headline is the cost to the countries just for saving in CTC. It is available on page number 6 और ये related है paper 3 economy section से. In this article, we have to know about cost to the company, reason behind the global trend of outsourcing, is it beneficial for the economy, issues and suggestions. तो दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, आप एक बार देख लीजिएगा. अगर हम ओवरव्यू देखें तो in this article it has been highlighted that private sector should realize that outsourcing's cost to the country might be much more than the cost to the company in the long run, right? बाकी अदर पॉइंट्स के लिए यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल, ठीक? आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज क्रिमिनलाइजिंग कंसेंशुअल रिलेशनशिप्स. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 7 और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो शुड द एज ऑफ कंसेंट be changed for adolescents? Why are consensual and non-exploitative sexual acts are also coming under the radar of POXCO Act and IPC? What are the ground realities and what have the courts observed and way ahead? तो दोस्तों, POXCO से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. बाकी ये पॉइंट्स यहाँ भी बहुत अच्छे से कवर्ड हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा. अगर हम ओवरव्यू देखें, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन इज नीडेड टू ब्रिज नॉलेज गैप्स, बिल्ड पॉजिटिव स्किल्स एंड एटीट्यूड्स so as to enable adolescents to make informed decisions and navigate through interpersonal relationships while also realizing the importance of their health and dignity. बाकी अदर पॉइंट्स के लिए आप एक बार इस आर्टिकल को देख लीजिएगा, ठीक? Our next important headline is the minimum tax on big businesses. It is available on page number 8 और ये related है paper 3 economy section से. In this article we have to know features and objectives of a global minimum tax. तो दोस्तों, recently members of European Union agreed in principle to implement a minimum tax of 15% on big businesses in accordance with the pillar 2 of the global tax agreement framed by Organization for Economic Cooperation and Development last year, right? Our next important headline is what are carbon markets and how do they operate? It is available on page number 8 और ये related है paper 3 environment section से. In this article we have to know about carbon markets, what are the types of carbon markets and what does the Energy Conservation Amendment Bill 2022 say about carbon markets and what are the concerns and way ahead. तो दोस्तों, carbon markets are essentially a tool for putting a price on carbon emissions and they establish trading systems where carbon credits or allowances can be bought and sold, and Energy Conservation Amendment Bill 2022 empowers the government to establish carbon markets in India and specify a carbon credit trading scheme, right? Our next important headline is Contextualizing Ambedkars idea of moral democracy. It is available on page number 9 और ये related paper 1 significant personalities से. In this article we have to know how does Ambedkar situate morality in his discourse of democracy, types of morality, key analysis and way ahead. तो दोस्तों, B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में. उसके अलावा कुछ अच्छे पॉइंट्स यहाँ भी गिवन है, तो आप यहाँ से भी देख लीजिएगा. अगर हम ओवरव्यू देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉर अम्बेडकर वाज अ प्रीरिक्विजिट टू मेंटेनिंग अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री, ठीक? आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज 80% डिक्लाइन इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट मिनिस्टर. इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 10 और ये रिलेटेड paper 3 internal security से. In this article we have to know what is the present status of insurgency related violence in northeast India, government's efforts in this direction. तो दोस्तों, इससे रिलेटेड कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक यू नो की कहां मिलेगा, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आप यहां से भी देख लीजिए.
लीजिएगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो कंसिस्टेंट एफर्ट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वीकेंड द इकोसिस्टम ऑफ टेरर एंड इट हैज रिजल्टेड इन अ शार्प 80% डिक्लाइन इन इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक। आवर नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Lok Sabha passes bill to extend ST status to Beta Kurba Community. It is available on page number 10 और ये related paper to polity and governance से। In this article we have to know features and objectives of the Constitution Scheduled Tribes Order 4th Amendment Bill 2022। तो दोस्तों इससे related content हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है एंड लिंक योनो की कहाँ मिलेगा। अगर हम ओवरव्यू देखें तो रिसेंटली लोकसभा पास द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 4th Amendment Bill 2022 and the bill will amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 for the inclusion of Beta Kurba Community in relation to the state of Karnataka। ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। Thanks for listening. For regular updates you can follow us on various social media platforms.